So I will start, and then first I will discuss a little bit brief about what we were doing in our last class. So this is going to be our lecture 8. सर नोट भेजे सर नहीं दिख रहा है स्लाइड Not visible? यस सर नहीं दिख रहा है Okay. Please confirm. यस सर दिख रहा है Okay, thank you. All right. So we'll begin our lecture 8. In the previous lecture, if you recall, we discussed for given a special kind of data, which we called as equispaced data. That means your points x1, x2, xn, ... they were equispaced, x0, x1, x2, ... xn. They were such that the distance between any of xi plus 1 and xi was fixed for all I. It was fixed. I is equals to 0 to n, 0 to n minus 1. These values were fixed to be h. So this is called equispaced or equidistant data. इस data के साथ हमने क्या किया? We showed that we can find polynomials. For that, we used your Gregory-Newton forward interpolation. And we can find function value, that is our approximate function value, and derivative at some point. So if the data is given at these point x0 to xn, which are equispaced data, we can find out the value of the function in between some points of x0 to x1, x1 to x2, etc., etc., or the derivative at some points from x0 to xn. And as I mentioned, we used Gregory-Newton interpolation, which we call as forward finite difference interpolation, right? Gregory-Newton forward interpolation. So in case of forward interpolation, what was the peculiar thing is that the reference point was x0. Okay, if you have noticed, the polynomial which you wrote, that was having the value fx0, delta fx0, etc., etc. That's why you are calling forward. The reference point is x0, x1, x2, ... xn. If the data is given in this manner, then when you apply the Newton-Gregory forward interpolation rule or forward interpolation formula, you realize that the reference points you have taken values in the beginning. Like I will write the formula for you. So the approximate polynomial fx was given by fx0 plus q delta fx0. Notice that here the reference point is x0, delta fx0 plus q minus 1 upon 2 factorial delta square fx0 plus ... plus
q minus 1 dot 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 q minus n minus 1 or q minus n plus 1 over n factorial delta n fx0. This is what we have got, where q, जहां पे q क्या था आपका, x minus x0 upon h. This was the q. And with the help of this formula, we also found the derivative of the approximate function which we tried. So the derivative f prime x, first derivative was given by formula 1 by h delta fx0 plus 2q minus 1 by 2 factorial, so that was 2 delta square fx0 plus dot dot dot. Okay, these formulas we have already discussed. So we can find the polynomial, we can find the function value, we can find the derivative using these Gregory-Newton forward interpolation formula, right? These were the formula which we discussed, right? So to brush up our memory, let us recall that for this purpose of applying the formula, we have found that these delta fx0 need to be found. In order to apply the formula, we need to find out delta fx0, delta square fx0, etc., etc., which otherwise is difficult to find out, and therefore we devised a method. So in order to obtain delta fx0, delta स्क्वायर fx0, बिकॉज हमें फार्मूले में ये वैल्यू चाहिए ना, इन सारी वैल्यूज को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. हम लोगों ने एक टेबल बनाया था जिसको हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का नाम दिया था. x fx, तो x की वैल्यू अगर x0, x1, x2 ऐसे करके अगर वैल्यूज हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज, अगर मान लो हमें ये दिया हुआ डेटा दिया हुआ था कि fx0, fx1, fx2 ऐसे है, तो पहला डिफरेंस जो है fx1 माइनस fx2, ये तो मैंने फार्मूला बताया था आपको, डेल्टा fx0 ये क्या हो जाता है, fx1 माइनस fx2, सॉरी fx1 माइनस fx0 और fx2 माइनस fx1, ये बन जाएगा डेल्टा fx1, जो डेल्टा का फार्मूला था. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ डेल्टा, दिस इज fx2 माइनस fx1, बिकॉज डेल्टा ऑफ fx is equals to fx plus h forward value minus fx. So delta fx0 is equals to fx0 plus h, that is fx1. So this way, by finding out the differences here, ये fx1 fx0 का डिफरेंस फाइंड किया, तो उससे हमें क्या मिल गया, डेल्टा fx0. अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करते तो it would have taken time, and therefore we made the table, and in this table the value which will come here, they will be referred as delta fx. वो कैसे हम निकालेंगे, fx1 में से fx0 को सब्सट्रैक्ट करके, fx2 में से fx1 को सब्सट्रैक्ट करके, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को जब डिफरेंस निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा स्क्वायर fx0, जो कि वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, fx2 माइनस 2fx1 प्लस fx0, तो ये वैल्यू आपकी डेल्टा fx निकल आई. तो ये हमारी पूरी टेबल इसी तरह से, एंड देन कीप ऑन डूइंग दैट, वी हैव गॉटन द टेबल, द फुल forward difference table. So as many as values were there, we have gotten those many forward difference table values, tabulated values. इस टेबुलेटेड वैल्यूज में जो पहले वाली एंट्रीज आती थी उनको हम लोग जो है डेल्टा fx0, डेल्टा स्क्वायर fx0 ऐसे करके हम नाम देते थे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली वैल्यू ये डेल्टा fx0 हो गई हमारी, ये वाली जो वैल्यू है ये डेल्टा स्क्वायर fx0, इसी तरह से ऐसे करके जो पहला एंट्री आता जा रहा था उसको हम लोग इनिशियल एंट्री में, और ये वाली fx0, तो ऐसे करके यही सारा नाम दे रहे थे, और वो वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पे fx0, डेल्टा fx0, डेल्टा स्क्वायर fx0 ऐसे से करते हुए अपने क्या तो डेरिवेटिव निकालने में, फंक्शन वैल्यू निकालने में, पॉलिनोमियल निकालने में, जो भी करने में इन वैल्यूज का हम लोग यूज कर रहे थे.
जस्ट टू ब्रश अप योर मेमोरी, एक क्विक एग्जांपल है जो मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, सिर्फ बिना ज्यादा डिटेल्स के मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं जो आप कर सकते हो अभी। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा डेटा हो गया और डेटा पॉइंट्स हो गए और उनके वैल्यूज जो है 3 6 11 18 एंड 27 ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो जब टेबल बना करके आप देखोगे यू कैन इजिली फाइंड आउट कि यहाँ से fx0 तो सीधे सीधे निकल आएगा, दिस इज योर x0 इज इक्वल टू 1, fx0 कितना है वो 3 हो जाएगा, डेल्टा fx0 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, डेल्टा fx0 इज इक्वल टू 3, डेल्टा स्क्वायर fx0 जब आप टेबल में देखोगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और डेल्टा क्यूब fx0 इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। You can do the calculation. Suppose for example let's find, मान लो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, f प्राइम 3.5, f प्राइम 3.5 से 4.5, f प्राइम 4.5 की वैल्यू फाइंड करनी हो मान लो। तो अभी देखो क्या हुआ, f प्राइम 4.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, the 4.5 is lying here between 4 and 5. So this value is not close to the value from the beginning, correct? हमने क्या कहा था कि हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले अगर पहले हम x0 का रेफरेंस ले रहे हैं तो वो उन वैल्यूज के लिए हेल्पफुल है जो कि इनिशियल वैल्यूज के आसपास हैं। However, here we have to find out f of 4.5, f prime 4.5 वो इनिशियल वैल्यू से बहुत दूर है। Still let us apply the formula and check. तो मान लो हम यहाँ पे फार्मूला लगा करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले q क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई h। अकॉर्डिंग टू आवर अर्लियर कन्वेंशन x इज इक्वल्स टू 4.5, x नॉट इज इक्वल्स टू 1, h इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस बिकम 3.5। तो f प्राइम 4.5 की वैल्यू, f प्राइम 4.5 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू यहाँ से देख लो फार्मूला, f प्राइम एट x इज इक्वल टू 1 बाई h डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब। सो अप्लाई द फार्मूला इज इक्वल टू 1 बाई h का मतलब 1 डेल्टा fx0 that is 3 plus 2q minus 1, 2 times 3.5 minus 1 over 2 factorial into डेल्टा स्क्वायर fx0, so डेल्टा स्क्वायर fx0 का वैल्यू 2 है, प्लस डेल्टा क्यूब वाला जो है वो 0 है तो वो 0 हो जाएगा एंड देन वहीं पे आप स्टॉप कर जाओगे और इसका वैल्यू अगर देखोगे तो क्या होगा, 2 गेट्स कैंसिल विद 2, यहाँ पे होगा 7 minus 1, 7 minus 1 is 6 and 6 plus 3 becomes 9। So f prime 4.5 का वैल्यू कितना निकल के आ गया, f prime 4.5 का वैल्यू निकल के आ गया 9, ठीक है। Although we are able to find in this case the value of f prime, right? But suppose if, because this was here in this particular case your delta cube values were 0, but suppose if these values were like delta cube, delta power 4, delta power 5, they were not 0, तो इस वाले फार्मूले में देखो वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आती ना, q, q minus 1, q minus 2, q minus 3, ऐसे करते करते वो सारे कैलकुलेशंस क्या होते हैं, slowly those calculation would have start becoming bigger and bigger and bigger, because the farther you are from x naught, the farther you are from the x naught, the bigger will be q, तो q का वैल्यू आपका बिगर होता जाएगा और उसकी वजह से ये जो कैलकुलेशन में जहां जहां q आएगा वो वैल्यू बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा टेडियस होता जाएगा, डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा नहीं होगा बट इट विल बिकम लिटिल बिट ऑफ कम्बरसम।
तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि whenever your values are near to the end point, जब हमारा डेटा के अगर एंड पॉइंट के करीब वैल्यूज होती हैं तो हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट गिव्स राइज टू, वो हम लोग कैसे करते हैं, दैट गिव्स राइज टू इन पैरेलल टू योर फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड में था बिल्कुल वैसे ही ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। एक कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे तो उसको पहले दिखा देते हैं आपको। मान लो f4.5 की वैल्यू निकालनी होती तो वो क्या हो जाता है हमारा fx0 का वैल्यू कितना है 3 प्लस q 3.5 डेल्टा fx0 दैट इज 3 प्लस q minus 1 that is 3.5 minus 1 2.5 upon 2 factorial डेल्टा स्क्वायर fx0 प्लस डेल्टा क्यूब वाला 0 हो जाता, और इसकी वैल्यू जब निकालोगे आप तो पूरा कैलकुलेशन करके देखोगे तो इसका वैल्यू 22.25 आएगा। तो ये इसका वैल्यू निकल के आता है f ऑफ 4.5 अगर हम फॉरवर्ड वाले इंटरपोलेशन फार्मूले से निकालते। तो ये जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है which as I told you, जिसको हम लोग ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी बोलते हैं। क्लास में है भी, आपको बाद में कॉल करते हैं। तो इसको हम लोग ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी बोलते हैं। नाउ व्हाई वी कॉल इट ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जब Q जो है उसका रेफरेंस लेते हैं हम लोग लास्ट वाले पॉइंट से x माइनस xn अपॉन h। अर्लियर हमारा Q क्या था x माइनस x0 अपॉन h, जो बिगिनिंग वाला पॉइंट है उसके रेफरेंस में लेते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको लास्ट वाले पॉइंट के रेफरेंस में लेते हैं। तो लास्ट वाले पॉइंट के तो सारे हमारे कैलकुलेशन बदल जाएंगे, फार्मूला पूरा बदल जाएगा, एंड द न्यू फार्मूला विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। fxn रेफरेंस हमारा fxn हो गया प्लस q, और इसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर fxn, क्योंकि अब हमें पीछे की तरफ आना है। प्लस अभी बताएंगे, सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, q प्लस 1 फार्मूला चेंज हो गया, q प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर fxn प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म q प्लस 1 डॉट 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 q प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल्टा n fxn। ये हमारा फार्मूला हो गया। आई एम नॉट वेटिंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला नाउ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द फार्मूला। इस फार्मूले में यहाँ पे जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स है, द मीनिंग ऑफ दैट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज एज फॉलोज। यहाँ पे जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी मीनिंग देखो क्या है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल्टा एफ एक्स आई, फॉरवर्ड डिफरेंस वाले की मैंने बताई थी अभी आपको, शायद मेरे ख्याल से कहीं पर लिखी थी यहाँ पे। फॉरवर्ड डिफरेंस की डेल्टा एफ एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये लिखी हुई है ना, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेप फॉरवर्ड जाइए, एफ एक्स प्लस एच दैट मीन्स एफ एक्स वन माइनस fx0 दैट आर fx2 माइनस fx1, ऐसे करके एक स्टेप आप आगे जाइए और पीछे वाले स्टेप से करिए। इन केस ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस हम क्या करते हैं, पीछे वाले स्टेप के साथ में, स्टेप पॉइंट के साथ में वैल्यू को करते हैं। तो अगर आप आयत पॉइंट पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हो तो बन जाएगा fxi माइनस, इसके जो पहले fxi के पीछे कौन होगा, fxi minus h, that is fxi minus 1. So this is the definition.
दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑल आई, हर एक आई के लिए, हर एक आई के लिए ये फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बैकवर्ड डिफरेंस, क्योंकि इसी की हमको जरूरत पड़ेगी, डेल्टा एक्सएन, हमारे पॉइंट्स आपको याद है ना, पॉइंट्स क्या थे, x0 से xn तक, x0 x1 x2 डॉट डॉट xn, इसका मतलब xn से पिछला पॉइंट कौन होगा, xn-1, उससे पिछला कौन होगा, xn-2, ऐसे करके। तो डेल्टा fxn, अगर डेल्टा fxn की वैल्यू है तो इस वाले रूल के हिसाब से देखो क्या रखोगे आप, fxn माइनस fxn-1, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, fxn माइनस fxn-1, तो उसकी वैल्यू डेल्टा fxn की हो जाएगी, ठीक है ना। डेल्टा इसी तरह से करते हुए fx, मान लो fx2 की वैल्यू निकालो, तो डेल्टा fx2 क्या हो जाएगा, fx2 माइनस fx2-1, दैट इज fx1, डेल्टा fx1 वो क्या हो जाएगा, fx1 माइनस fx1-1 fx0। अब इसके बाद नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा fx0 अगर निकालोगे तो वो fx0 माइनस fx0 के पहली वैल्यू, fx0 के पहले तो कुछ है ही नहीं, fx0 इज द लास्ट वैल्यू, so this is what you can find out the when you are finding the backward data। सिमिलरली अगर आप डेल्टा स्क्वायर मान लो fxn निकालना चाहते हो, डेल्टा स्क्वायर fxn क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा fxn, डेल्टा fxn का वैल्यू यहां से रख दो, तो ये डेल्टा ऑफ fxn माइनस fxn-1, अब ये डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा इन पे, तो बन जाएगा डेल्टा fxn माइनस डेल्टा fxn-1। ध्यान से देखो, डेल्टा fxn फिर से क्या हो जाएगा इस वाले फार्मूले से, fxn-1 माइनस, सॉरी fxn माइनस fxn माइनस fxn-1, ये तो वैल्यू होगी डेल्टा fxn की, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा fxn-1 की माइनस fxn-1 माइनस fxn-2, यहाँ पे n की जगह पे n-1 रख दोगे इस वाले में, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली यू विल गेट fxn माइनस 2fxn-1 plus fxn-2। So in the similar fashion, you can get the values of these fxn, delta square fxn, उसकी वैल्यू ये निकल के आ गई। And in the similar fashion, you will do that. As I told you earlier, जैसे पहले बताया था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में भी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के जो फार्मूले लगाने में भी डिफिकल्टी थी, बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूले लगाने में भी डिफिकल्टी होगी, इसलिए हम इसके लिए भी क्या करते हैं, टेबुलेटेड कर लेते हैं। तो वी मेक द टेबुलेटेड डेटा इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला लगा लगा के वैल्यू निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट नाउ अ बैकवर्ड, ध्यान से देखो कि कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस table. So we construct the backward difference table. How the backward difference table is constructed, I will show you x fx, ये तो आपका डेटा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं instead of getting into। So suppose your values are 1 2 3 4 and 5 and the data is 3 6 11 18 and 27. So this is the data 1 2 3 4 5 3 6 11 18 27, सेम डेटा जो हमने अभी यहाँ पे लिया हुआ था वही वाला है इसमें भी। नाउ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो पहली एंट्री हमारी डेल्टा fx आएगी, बैकवर्ड वाला। डेफिनेशन देखो क्या कहती है, अगर आप डेल्टा x1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो क्या होगा, fx1 माइनस fx0, है ना। तो बड़े वाले इंडेक्स से छोटा वाला इंडेक्स घट रहा है ना, और तो कुछ हो नहीं रहा है, बस केवल उसकी नाम में चेंज हो रहा है। तो यहां पर देखो क्या होगा, 6 is fx1 because this is x0, this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, so this is
fx0, दिस इज fx1. सो ये अगर इसका डिफरेंस लोगे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या मिलेगा 3. इसका नाम लेकिन अब क्या हो जाएगा fx1. अर्लियर में fx डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा fx0 था, बट यहाँ पे क्या है fx1 माइनस fx0. बिकॉज इट इज fx1 माइनस fx0, दिस विल बी बैकवर्ड डेल्टा fx1. इसका नाम हो जाएगा बैकवर्ड डेल्टा fx1 बिकॉज इट इज fx1 माइनस fx0. सिमिलरली यहां से यहां वैल्यू निकालोगे तो ये 5, ये क्या हो गया बैकवर्ड डेल्टा fx2. इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 7 आ जाएगा, ये बैकवर्ड डेल्टा fx3. और ये वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो गया बैकवर्ड डेल्टा fx4. अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो देन वी विल फाइंड द डेल्टा स्क्वायर fx. डेल्टा स्क्वायर fx की वैल्यू निकालते वक्त क्या हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो हो गया डेल्टा fx2 माइनस डेल्टा fx1. तो डेल्टा fx2 माइनस डेल्टा fx1 इज डेल्टा स्क्वायर fx2. So this will give you 5 minus 3 is 2. This value is delta square fx2. The difference between these two values is 2. This is delta square fx3. And this is 2. That is also delta square fx4. Similarly, हम आगे वाला एंट्री जब टेबल का बनाएंगे तो then it will become delta cube fx, and the delta cube fx will be, if you take the differences here, it will be 0 0. However, the name of these will be, this is delta cube fx3 and this is delta cube fx4. So notice carefully, ये तो x4 है, ये fx4 है, ये डेल्टा fx4 है, ये डेल्टा स्क्वायर fx4 है, ये डेल्टा क्यूब fx4 है. इनकी वैल्यू आपकी ये 0 2 9 27 एटसेट्रा एटसेट्रा आ रही है. तो फॉरवर्ड टेबल में क्या करते थे आप, ऊपर वाली वैल्यूज पहले रो में जो वैल्यूज आती थी उनको लेते थे. बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में आप क्या करोगे, जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, fxn, डेल्टा fxn, डेल्टा स्क्वायर fxn, डेल्टा क्यूब fxn. दैट मींस कि आपको बॉटम वाली जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपको कंसीडर करनी है. फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से देखिए, हमको ये फार्मूला यूज करना है. आई एम मेकिंग दिस लिटिल बिगर सो दैट यू कैन सी दिस वन. हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है और यहां पर ओके हमको ये फार्मूला यूज करना है और यहां पर xn इज इक्वल्स टू क्या है 5. ओके, xn मींस x4, x4 इज इक्वल्स टू 5 और q निकालना होगा. So we are going to find out here, suppose we want to find out f4.5. f4.5 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे q कितना हो जाएगा, x4 माइनस सॉरी x माइनस xn. Formula is x minus xn by h, that is x is 4.5 minus x4, that is 5, divided by h, that is 1. So this will become minus of 0.5 or 1 by 2, minus of 0.5. Minus 0.5 जो है वो q की वैल्यू आ गई. So apply the formula. So formula says the value at 4.5 fx is equals to fx4, that is, एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए. ये हो जाएगा fx4 प्लस q बैकवर्ड डेल्टा fx4 प्लस is there some issue in network? Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But there was a lag earlier for a few seconds. Now it is fine. Yes, sir, it's fine. All right. Okay. Thank you. So this is fx4 q बैकवर्ड डेल्टा x4. देन आगे फार्मूले में देखो क्या था, q plus 1 है ना, q plus 1 upon 2 फैक्टोरियल.
डेल्टा स्क्वायर fx4. सो आगे वाली वैल्यू हम लोग लिख देते हैं q प्लस 1. ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर क्या है, पिछले वाले फॉर्मूले q माइनस 1 हुआ करता था, यहाँ पे q प्लस 1 हो जाएगा. बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर fx4 प्लस ऐसे करते हुए यहाँ पे q प्लस 1 q प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल्टा क्यूब fx4. बस यहीं तक लिखेंगे बिकॉज बैकवर्ड डेल्टा क्यूब x4 की वैल्यू 0 आ रही है, so this will vanish and then therefore we will not write it further. fx4 का वैल्यू टेबल से आप देख सकते हो, fx4 is 27 प्लस q का वैल्यू तो आपके पास में यहां से आ गया है माइनस 0.5 एंड बैकवर्ड डेल्टा x4 की वैल्यू 9 प्लस q that is minus 0.5, q plus 1 plus 0.5 divided by 2 factorial means 2 और डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू 2 plus next term is 0. This 2 gets cancelled here. So this becomes 27 minus 4.5 minus 0.25. So eventually you will get that 22.25. So you get the same value. Naturally you will get the same value, but because it's coming via polynomial, the data is coming from the polynomial. So but the calculation now becomes easier because these quantities, they are smaller quantities, so you can deal with them easily and the calculation becomes easier. It's easier to deal with the problems when you have to find out the values which are nearer to end point. Then application of backward difference Newton's formula is far more easier. All right. So let us continue and try this example. So suppose our data is given here x fx. The data is 3, 4, 5, 6. And the value of function is given as 6, 24, 60 and 120. Now I ask you, A, find the polynomial. Now how many data points are there? 4. So I'm expecting a third degree polynomial. Okay, third degree or lower. Third degree or lower. Find a polynomial using our backward interpolation. By backward interpolation I mean Newton's backward interpolation. And B is, suppose I ask you to find f prime 5.5, f prime 6, f double prime 6. So find these values. Suppose if we have to find these values, then naturally what will happen? We have to construct a backward difference table because I have to use backward interpolation. So first of all, first thing first, construct backward difference table. सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं. ये x हो गया, ये fx हो गया, ये बैकवर्ड fx डेल्टा fx हो गया, ये बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर fx हो गया. पहले इतना निकाल लेते हैं फिर देखते हैं कितना हमें जरूरत पड़ता है. The data is 3, 4, 5, 6 and the corresponding data is 6, 24,
60, 120. So first, as I told you, the difference between these two is 18. The difference between these two is 36. The difference between these two is 60. Now difference, as I told you, you always subtract this value to this value. Whether it's forward or backward does not matter. Only thing is that how do you name them? What do you call them? Here, the difference between these two values is 18, and here 24. And then further, the next value is 6. So this is delta cube fx. Notice that this is x0, x1, x2, x0, x1, x2, x3. So this is our x3. This becomes our fx3. This becomes our backward difference fx3. As I told you, here you have to identify backward. This is backward square fx3, and this is backward cube fx3. तो डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए यू हैव टू यूज द फार्मूला. फॉर फाइंड पॉलिनोमियल यू हैव टू यूज फार्मूला. फार्मूला क्या था? लेट मी शो यू फार्मूला समवेयर. Formula here. Formula is this formula where q is equals to, so here in this case you have to find polynomial, therefore you have to remain x as x. x को x ही रखना है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फाइंड करते हो. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? a सॉल्यूशन के लिए फॉर पॉलिनोमियल q is equals to x माइनस, यहाँ पे xn कितना है? x3. x minus x3 by h is equals to x minus 6 by 1, that is x minus 6. तो ये q का वैल्यू हो गया आपका, ठीक है ना. Then the polynomial is given by using Newton's backward interpolation. बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करके आप देखो fx का वैल्यू कैसे निकालोगे? fx इज इक्वल्स टू fx3. fx इज इक्वल्स टू fx3 प्लस q बैकवर्ड डिफरेंस fx3 प्लस q प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fx3 प्लस q plus 1 q plus 2 upon 3 factorial delta cube fx3. आपकी वैल्यू देखो डेल्टा क्यूब fx3 पे जाके स्टॉप हो गई है, therefore you will not write it further, you will stop here. The value of fx3 is nothing but 120 plus value of q is x minus 6. The value of delta fx3 is 60. The value of q is x minus 6. The value of q plus 1 will be x minus 5. X minus 6 plus 1, x minus 5 upon 2. Factorial is 2. Delta square fx3 is 24 plus here q is x minus 6. Q plus 1, x minus 5. Q plus 2, x minus 4 upon 3 factorial 6 multiplied by delta cube, that is 6. So eventually what will you get? This 6 gets cancelled from here. This becomes 12. So you will get little bit of calculation here. You will get 120 plus 60 minus 60x minus 60x minus 360. And here you will take this product of these two. So x square minus 11x plus 30, that will become 12x square minus 132x, 11 into 12, 132x, and here plus 30, so plus 360, plus here you have to do the product, and the product will be suppose if I take the product of these two, they will become x square minus 9x
plus 20, and then I will take the product with this one. That will become x cube minus 9x square plus 20x, and then with 6 I have to multiply here. So minus 6x square, 9 6 54 x and 20, so 120 minus 120. Okay, now look at it carefully. This 120 cancels with this 120. This 360 cancels with this 360. Okay. Now look at this. This is 60x positive, 54x positive. So 60 and 54, they are positive. They make it 114. Plus 20 is also there. Plus 20 is also there. That makes it 134. So, and where is the negative x is minus 132, minus 132. So you are getting 2x positive. Okay, so plus 2x, then x square. So you have 12x square here, you have minus 9x square here, you have minus 6x square here, so you will get minus 3x square, and you have only left with this x cube. So this is the polynomial you will get. So fx is equals to this polynomial. So this is the polynomial which you are looking for. Okay, so this becomes your polynomial. Does that make sense to you? All right. Now, I hope everything is all right till this point. Yes, sir. Okay. Now, our second part of the problem was to find out the derivatives. F prime 5.5, F prime 6. So for that, we'll apply the formula in the similar manner as earlier. Like we'll get this value here. As in case of forward difference, if you recall, as in case of forward difference, from here, from this formula, we found the derivative f prime x. How did we find f prime x? By finding out df over dq. This right hand side is a function of q, and dq by dx, that will become 1 by h. In a similar fashion, we'll differentiate this expression. All right. So let us write the derivative formula for you. All right. Okay. Now, so from here, f prime x का वैल्यू क्या हो जाएगा? That will be, ये जो राइट हैंड साइड है इसका q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और q का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 by h, बिल्कुल फॉरवर्ड डिफरेंस की तरह से हो जाएगा. ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा. यहाँ पे q के रिस्पेक्ट में करोगे तो बैकवर्ड डेल्टा fx n आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2q, q स्क्वायर प्लस q, तो बन जाएगा 2q प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर fxn प्लस अगला वाला आएगा q प्लस 1 q प्लस 2. जब उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस
6q plus 2 upon 3 factorial delta cube fxn plus डॉट 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 एंड देन उसको छोड़ देते हैं। आखिरी वाला जो है एक्चुअली डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी क्यू ऑफ q q प्लस 1, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम, q प्लस n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल और डेल्टा n fxn, ये हमारा फार्मूला बनेगा। और अगर हमें डबल प्राइम निकालना हो तो f डबल प्राइम x का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन होगा ना, तो 1 बाई एच स्क्वायर, इस बार ये वाला टर्म भी वैनिश हो जाएगा, 2q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर fxn। यहाँ पे देखो इसका जो डिफरेंशिएशन आप q के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6q प्लस 6, उसमें से 6 कॉमन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 ही है, तो प्लस q प्लस 1 डेल्टा क्यूब fxn एंड प्लस डॉट 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 को हम छोड़ देते हैं, जितना हमें जब जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन आवर केस। तो आवर केस में हमारे ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज है fx3 डेल्टा fx3 डेल्टा स्क्वायर fx3 डेल्टा क्यूब fx3, केवल डेल्टा क्यूब तक है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, सो टू फाइंड f प्राइम 5.5, सो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो गया 5.5, तो q का जो अगर डिफिनेशन हमें देना पड़ेगा तो x माइनस xn अपॉन x माइनस xn अपॉन h के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 5.5 माइनस xn इज, look at it, it is 3456, so that is x3, last value is x3 3456, so xn minus x3 is equals to 6 and divided by h is 1, so this is minus 0.5, so f prime 5.5 will be given by this formula, है ना। तो उसके लिए आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले डेल्टा, दैट विल बी डेल्टा fx3 1 by h डेल्टा fx3 प्लस 2q प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर fx3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 6q plus 2 upon 3 factorial, that is 6 delta cube fx3 सिर्फ डेल्टा क्यूब तक ही है इसलिए वैल्यू हम इतनी रखेंगे। सो इफ यू रिकॉल h की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 by 1 हो जाएगा, डेल्टा fx3 की वैल्यू हमारी 60 थी, है ना, प्लीज रिमेंबर fx3 120, ये 60, ये 24, ये 6, तो इसको 60 वैल्यू रख दो, डेल्टा fx3 is 60 plus 2 times q means 0.5 plus 1 divided by 2 into delta square 24, correct, delta square is 24 plus 3 into 0 minus 0.5 square plus 6 into minus 0.5 plus 2 divided by 6 into 6, देखो ये 2 5 से 10, दैट इज ये तो हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये वैल्यू तो पूरी वैनिश कर जाएगी, तो 0 हो जाएगा। तो आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा, यहाँ से 60 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा आपको 0.25 0.75, है ना, और यहाँ से मिलेगा -3। तो फाइनल जब कैलकुलेशन करोगे आप तो ये जो सारा वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस 0.75 minus 1 that will give you 59.75. so this is the value of f prime 5.5, okay, f prime 5.5 का जो वैल्यू आ गया वो आपका 59.75 आ गया। अब हमें f prime 6 कैलकुलेट करना है, देखोगे तो f prime 6 जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, f prime 6 will become very easy
क्यों? क्योंकि क्यू में आपकी बार जो है पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस हो गया वो 6 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज टू फाइंड एफ प्राइम 6। एफ प्राइम 6 के लिए q is equals to 6 minus 6 by 1, that is 0. So q की वैल्यू 0 हो गई, तो f prime 6 is equals to delta 1 by h, 1 by 1 delta fx3, that is 60 plus 2 times 0 plus 1 by 2 delta square, that is 24 plus 3 times 0 square plus 6 times 0 plus 2 by 6 into 6. तो दिस इज योर f प्राइम 6 वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 60, यहाँ से आएगा आपको 12 प्लस 12 और यहाँ से मिलेगा आपको 6 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 74। सो f प्राइम 6 का वैल्यू आपका आ गया 74। अब इसी तरह से f डबल प्राइम 6 अगर निकालना होगा तो देखो क्या हो जाएगा। f डबल प्राइम 6 के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 बाई एच स्क्वायर डेल्टा क्यूब। सिर्फ दो वैल्यू है तो दो ही वैल्यू लिखनी है आपको, फटाफट दो वैल्यू लिख सकते हैं। 1 बाई एच स्क्वायर का मतलब हो गया 1 बाई 1 स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर fx3 प्लस q प्लस 1 डेल्टा क्यूब fx3। सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर fx3 का वैल्यू, डेल्टा स्क्वायर fx3 का वैल्यू 24 है। और एक बार चेक कर लो, डेल्टा स्क्वायर fx3 का वैल्यू 24 है और डेल्टा क्यूब का वैल्यू 6 है। डेल्टा स्क्वायर इज 24 प्लस डेल्टा क्यूब इज 6 और क्यूब प्लस 1 दैट विल बिकम 0 प्लस 1, so that is 24 plus 6 30। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। Does it make sense? So now we have understood how to find out Newton, how to find out the polynomial using the backward. So if the data is given in such a manner that the value where you have to find, that value is coming close to the value which is towards the end point, then these values will be given by this derivative will be given by these formula। ये वाले फार्मूले से मिलेंगी यहाँ पर, है ना। तो ये आपका f प्राइम का फार्मूला हो गया और ये दूसरा वाला f डबल प्राइम का फार्मूला हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप उस फार्मूले को निकाल सकते हो। जैसे इसका ये आखिरी वाला पॉइंट, इसमें क्या बन जाएगा। सो हियर यू कैन राइट हियर प्लस डॉट 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 प्लस इसका दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्चुअली, d2 बाई dq2 ऑफ दिस वैल्यू q प्लस 1 डॉट 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 q प्लस n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल बैकवर्ड डेल्टा n fx n। ये हमारा फार्मूला हो गया f, ये f फार्मूला हो गया, ये f प्राइम फार्मूला हो गया, ये f डबल प्राइम फार्मूला हो गया। ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस केस में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो so let us try and practice a couple of problems here, and or later you can try and practice. So I'll give you a couple of exercises. So find delta fx4, delta square fx4, etc. from x fx
1, 2, 3, 4, 5, x0, x1, x2, x3, x4, और इसका वैल्यू है 1, 8, 27, 64 एंड 125। ध्यान से देखोगे तो ये सब क्यूब है, ऑल दीज आर क्यूब वैल्यूज, है ना। सो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपका आंसर आएगा, सॉरी बैकवर्ड डिफरेंस वाले सारे निकालने हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका है x4 इज इक्वल टू 5, fx4 इक्वल्स टू f5 इज इक्वल्स टू 125, बैकवर्ड डेल्टा fx4 इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 61, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर fx4 इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा 24, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब fx4 इसकी जो वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 6, और बैकवर्ड डेल्टा 4 fx4 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 0। एज आई टोल्ड यू कि ये फंक्शन देखो तो क्यूब fx इज इक्वल्स टू x क्यूब वाली डेटा फॉलो कर रहा है, इसीलिए डेल्टा क्यूब कांस्टेंट है, और डेल्टा पावर 4 जब निकाल रहे हो आप डिफरेंस तो वो 0 के बराबर हो जा रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो उसके जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल उसकी सेम अगर हम डिफरेंस ऑपरेटर के बोलेंगे तो वो वहां पे कांस्टेंट होगा, और उसके आगे कर देंगे तो वो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। एक और एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं आपके लिए लास्ट। सो सेम चीज है, फाइंड डेल्टा fx4, डेल्टा स्क्वायर fx4 एटसेट्रा फ्रॉम, डेटा हमें दिया हुआ है x1, 2, 3, 4, 5, और fx हमें दिया हुआ है 2, 6, 12, 20, 30। ओके, फिर से देखोगे ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, it is x square plus x, actually the data is x square plus x। तो यहाँ पे भी आपको ये x4 है, ये fx4 है। सो आंसर्स जो आपके निकल के आएंगे जब बनाओगे, आप टेबल बनाओगे, तो दिस इज x4 इज इक्वल्स टू 5, fx4 is equals to 30, delta fx4 is equals to 10, delta square fx4 is equals to 2, and delta cube fx4, as I told you it is x square plus x data, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके वैल्यूज आएंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे या किसी दूसरी स्लाइड में? एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. All right, perfect. So in totality what we have done so far is that we have covered, so we have covered numerical integration. In the numerical integration we have covered Newton codes, where we have the data which was finite, having the finite differences, equi-space data, and then the second one was, so those kind of numerical integration. Then further we have interpolation and numerical differentiation. So we have now studied or completed interpolation and numerical differentiation. So in this we have discussed or studied Lagrange and Newton's. So Lagrange's interpolation,
for interpolation, where the data may not be equispaced. In case of Lagrange, the data may not be equispaced, but Newton's के केस में क्या था? Equispaced data था, equispaced. डेटा जब equispaced था तो हम लोगों ने न्यूटन्स इंटरपोलेशन हमें यूज किया, और उससे इंटरपोलेशन करके या तो हमें पॉलिनोमियल और या वी हैव फाउंड पॉलिनोमियल एंड वी हैव फाउंड डेरिवेटिव्स. तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन डेटा, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, और फ्रॉम द गिवन डेटा हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन. So this completes this today's session, completes this particular topic. So I will stop here today. A little earlier I am closing this session, and in the next session, which will be our next week, in the next session we will discuss about system of linear equations and associated matrices, and then properties of matrices, and then so on and so forth. So we will now venture into another domain. As I told you, there are 3 separate domains in this particular course. So we have completed one domain, and now we will venture into another domain of the course. So we'll stop here. This is it for today. So for today, we will stop here. New class, new content will begin in the next class. Okay. So we'll stop here. Thank you, sir. Yeah. So Thank you, stop sir. recording. Yes, I will stop recording now. And if there is any question from anyone, Sir,